Hello everyone, I am Ankit Kanodia, founder of SmartSync Services, a SEBI registered investment advisory firm based out of Ahmedabad. Welcome to the 19th episode of Mission Smile guest webinar. For those who are joining or watching for the first time, Mission Smile stands for Making New Stock Market Investors Learn It Through Engaging Research. We are happy to share that 7,000 plus investors now learn about investing on our Mission Smile platform. This month, that is December 2024, the theme for Mission Smile is real estate. So firstly, we started with a YouTube video titled The Real Estate Rally, Is It Sustainable? Now we are having this session with Mr. Vishal Bhargav. Thirdly, on 20th, which is again a Saturday, we will present on a hidden small cap real estate business. And fourthly, we are in advanced discussion with a few promoters of listed real estate companies. We'll inform when it gets confirmed. So we'll try our best to get a promoter of a real estate company also on our platform. So that is our whole plan for this month, which is on real estate. And when we talk about guest webinar, it is an initiative where we call veterans from the industry and learn from their rich experience in the stock market or their respective field. Speaking of veterans, we have one with us today, Mr. Vishal Bhargav. Mr. Vishal is well-known real estate expert who has worked extensively with popular institutions like ET Now, Economic Times, CLSA India, Bank of America. His Twitter handle and YouTube podcast are very insightful for any person to understand about the sector. In fact, before coming for this session, I referred to many of his podcasts, and some of my questions today will be based on what I learned from those podcasts only. Because of his rich experience in the real estate, we have titled the 19th Mission Smile guest webinar as Behind the Skyline, Trends, Projects and Opportunities. So over to you, Vishalji. It would be great if you can have an opening remark from your side before I go to the questions. Thank you, Ankit ji, for having me on your session. I've been following your page also in terms of the advisory services that you offer. जैसे आपने कहा before the session कि while I am no longer in the stock market field, many of the real estate companies are invariably listed now. और वो जो pace है real estate companies का list होने का, that's actually only picking up in speed. तो उसकी वजह से लॉट ऑफ ट्रांसपेरेंसी आ गई है इन टर्म्स ऑफ डेटा इन्फॉर्मेशन जो पहले काफी कम होता था. सो आई जस्ट व्हेन आई स्टार्टेड द इंडस्ट्री बहुत ही ओपेक स्पेस था, इन्फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं था, डेटा बिल्कुल नहीं था. अभी वो बहुत बदल रहा है. एंड आई थिंक ओवर द नेक्स्ट वन आवर or so, based on I think our questions and answers, hopefully for your viewers as well as your subscribers, ये जो चैट हमारी होगी सबके लिए यूजफुल होगी. थैंक यू सो मच विशाल जी. एंड हम लोग इसको फ्री फ्लोइंग ही रखेंगे. आप आराम से दिल से जो आपने अपने एक्सपीरियंस में सीखा है आप एकदम आराम से बोलिए, ठीक है. सो आई स्टार्ट विथ माय फर्स्ट क्वेश्चन. सो विशाल जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट. टेल अस फर्स्ट अबाउट योर अर्ली डेज, योर करियर एंड हाउ यू एंडेड अप इन द रियल एस्टेट सेक्टर. We all are suckers for stories, so please keep them coming in support of your answers. तो अंकित जी, आई एक्चुअली गॉट इनटू रियल एस्टेट बाय एक्सीडेंट. मेरा कुछ प्लान नहीं था रियल एस्टेट एंटर करने के लिए. मेरा प्राइमरी फील्ड एक्चुअली फाइनेंस और मीडिया में था. तो काफी सालों के लिए मैं आपके जैसे फील्ड में था इन टर्म्स ऑफ स्टॉक रिसर्च, बोथ एट इकोनॉमिक टाइम्स एज वेल एज CLSA. ये तो एक दौर था जब मैं घर ढूंढ रहा था, और उस वक्त घर ढूंढने के लिए बहुत कॉम्प्लिकेशंस मार्केट में थी. कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं होता था, सब लोग झूठ ही बोल रहे होते, ठीक है. तो व्हेन यू आर इन द मार्केट प्लेस ना, कोई आपको एक जो गाइडेंस होता है ना, वो जीरो था, ठीक है. आपका बेस्ट गाइड होता था कोई फैमिली मेंबर, ठीक है, जिसको लगता था कि वो एक्सपर्ट है, या कोई ब्रोकर. तो उस दौरान जब मैं ये घर की सर्च देख रहा था, मैंने एक साल में अंकित जी क्लोज टू आई डोंट नो 500 होम्स देखे होंगे. वो मेरा रिसर्च ग्राउंड था. अगर आप मुझसे पूछेंगे ना कहाँ मैंने रिसर्च
रियल एस्टेट रिसर्च सीखा वो उस दौरान था, क्योंकि जब भी आप कोई प्रोजेक्ट जाते हो, आपको वो प्रोजेक्ट का सेल्स पर्सन सब कुछ अच्छा बता देता है उस लोकेशन का, उस प्रोजेक्ट का, और वो सब बाकी दूसरों प्रोजेक्ट का सब वीकनेसेस बता देता है। तो बाय द टाइम इट 1 ईयर वाज कंप्लीट ना, और क्योंकि मेरा सर्च वैसा नहीं था कि मुझे एक छोटे से लोकेशन पे ही चाहिए था, मैं सोच रहा था, उस वक्त इन्वेस्टमेंट का भी माहौल होता था रियल एस्टेट में। अभी मैं जानता हूँ ज्यादा नहीं है, पर उस वक्त होता था। तो मेरा रेडियस बहुत बड़ा था मुंबई में। तो पूरा मुंबई का रिसर्च मेरा 1 साल पे हो गया कि क्या क्या फैक्टर्स होते हैं घर सिलेक्शन में, कौन कौन से बिल्डर्स का सेल्स स्ट्रैटेजी अच्छा है, कौन कौन सा कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छा होता है, क्योंकि ये सब सेल्स वो प्रोसेस में सब समझ आ जाता है। बिल्डर ये बोल देगा, सर मेरा तो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी देख लो, मेरे 4 बिल्डिंग खड़े हैं यहाँ पे, आपको क्वालिटी मेरा नंबर 1 है। बाजू वाला जो प्रोजेक्ट है ना, उसका 1 किलोमीटर दूर आपका, आप उसके प्रोजेक्ट देखोगे ना, वो बना है 3 साल पहले, पर आपको लगेगा कि ये 30 साल पुराना प्रोजेक्ट है। तो आप समझ जाओगे कि उसका कंस्ट्रक्शन क्वालिटी पुअर है। तो आई गॉट इन बाय एक्सीडेंट। और जब मैंने ये हाउस फर्म अप किया, तब मैंने देखा कि मेरे जैसे बहुत से लोग हैं जिनको घर खरीदना है, पर गाइडेंस बिल्कुल नहीं है। तो दैट्स हाउ आई गॉट इन दिस फील्ड, रियल एस्टेट नॉलेज का। अगेन बाय एक्सीडेंट I tied up with Network 18 to do content. वो भी accident ही था actually, क्योंकि we had another business going on with Network 18 for my other company. और उस वक्त हम लोग बात कर रहे थे कि रियल एस्टेट में ABC आप कर सकते हैं। तो उन्होंने प्रपोज कर दिया कि आप ही क्यों नहीं शुरू कर देते। और मैंने शुरू कर दिया, और वो इंस्टेंट हिट जैसे होता है ना, वो थोड़ा हो गया। एंड फ्रॉम देयर इट्स जस्ट कंटिन्यूड। ग्रेट ग्रेट। तो ये कब की बात बता रहे हो आप, अगर अपने टाइम लाइन देखना देखिए, चाहें? जब मैं घर ढूंढ रहा था सबसे पहले, वो था करीबन 2009, 2010, उस वक्त वो 2009 एक्चुअली, वो लीमन क्राइसिस था ना, उस राइट। दौर में था। ओके। सब कुछ, सब पूरा मार्केट टूट रहा था, और अ, एकदम एक्साइटमेंट था मार्केट में, इफ यू आर अ बायर, राइट कि सब लोग ईगर थे आपको बेचने के लिए। राइट। तो ये काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी आपने अपनी बताई। बट अगर अपने, जैसे मैंने आपके काफी पॉडकास्ट सुने थे, तो मैंने एक चीज नोटिस की कि आपका रिसर्च नॉट जस्ट इन, जैसे आपने बताया कि आपने 500 होम्स को स्टडी किया एक साल के अंदर। बट मुझे सबसे अच्छी चीज लगी आपके अंदर में कि आपने रियल एस्टेट की कितनी हिस्ट्री पीछे तक भी जाके आपने देखी, और काफी सारी स्टोरीज आपको पता है कि कैसे मुंबई के रियल एस्टेट कहाँ से चालू हुआ, कैसे क्या हुआ। तो अगर आप लेट्स स्टार्ट विद दैट, कि कुछ एक कॉन्टेक्स्ट आप बनाओ जहाँ पे कि आप थोड़ा हिस्ट्री बताओ इंडिया में रियल एस्टेट की हिस्ट्री कैसे, अगर आपको बताना हो किसी को 10 मिनट में या 5 मिनट में, तो आप कैसे बताओगे? देखिए, रियल एस्टेट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड है, ठीक है, जिसको समहाउ मीडिया ने बहुत बोरिंग बना दिया है, ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ ज्ञान जो होता है ना, हाउसिंग सेल्स एट रिकॉर्ड हाई, जीडीपी ग्रोथ, अफोर्डेबिलिटी, वो सभी लोग बोलते रहते हैं, जिसकी वजह से किसी को इंटरेस्ट नहीं है। पर अगर किसी को हाउसिंग हिस्ट्री, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सी लर्निंग्स जो आप को प्लान करना है ना, आप हिस्ट्री देखोगे ना, आप समझ जाओगे कि क्या क्या ट्रेंड्स आगे आ सकते हैं। टाइमिंग ठीक है, डिबेटेबल हो सकता है कि विल इट हैपन इन 2025, विल इट हैपन इन 2040, क्योंकि बहुत से साइकिल्स आते हैं बीच में। ये मुंबई का हिस्ट्री, एक तो इट इज प्रोबेबली इन माय व्यू, मुंबई इज द मोस्ट फैसिनेटिंग सिटी इन एशिया, ठीक है। और मैं काफी काम कर चुका हूँ दूसरे शहरों में भी एशिया के। तो बेस्ड ऑन हिस्ट्री अलोन, वो बहुत ही एक्साइटिंग शहर है। एक शहर जो अ, जिसके लिए ज्यादा क्रेडिट हमको लेना नहीं चाहिए, ठीक है। हमारा, इट इज मुंबई, और जो यहाँ पहले बॉम्बे होता था, दैट इज अ प्रोडक्ट ऑफ ब्रिटिश इमेजिनेशन, ब्रिटिश विजन। पहले मुंबई होता था 7 आइलैंड्स, छोटे छोटे आइलैंड्स होते थे, उनको जोड़ दिया और एक बड़ा आइलैंड बन गया, ठीक है। उस वक्त मुंबई की ज्यादा वैल्यू नहीं थी, एक्सेप्ट एज अ सोर्स ऑफ डाउरी,
ठीक है। मुंबई ब्रिटिश को मिला डाउरी की के वजह से। एक पोर्चुगीज रॉयल फैमिली और एक ब्रिटिश फैमिली के बीच में शादी हो रही थी, उनको डाउरी चाहिए थी। ब्रिटिश ने उनको बॉम्बे दे दिया। ठीक है। बॉम्बे काफी नहीं था, तो उनको और भी कुछ देना पड़ा। ठीक है। पर वो शादी के बाद ब्रिटिश लोग भी काफी खुश नहीं थे, तो इसलिए उन्होंने बॉम्बे को लीज कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को एट अ रेट ऑफ £10 पर ईयर। वो था रेट बॉम्बे का। ठीक है। ये मैं बोल रहा हूँ 1668 की। ठीक है। 100 साल के बाद करीबन ये जो बॉम्बे था 7 आइलैंड्स का, वो उसका प्रोसेस शुरू हो गया एक बनने के लिए। बॉम्बे की दो खासियत है। ठीक है। जिसकी वजह से बॉम्बे अमीर हुआ। एक था ओपियम, गांजा जो ड्रग्स बोलते हैं, और दूसरा था कॉटन। ओपियम उस टाइम लीगल था, तो ऐसा नहीं है कि कुछ इलीगल चीज हो रहा था। काफी लोग उस बिजनेस में थे, और ज्यादातर वो फेस डोमिनेटेड था पारसीज और जूस जूस के बीच में। और यही दो कम्युनिटीज डोमिनेंट थी कॉटन में भी, जिसकी वजह से बॉम्बे बिकेम वन ऑफ द रिचेस्ट सिटीज ऑफ इंडिया। ठीक है। और इन दोनों बिजनेस के वजह से जो भी डेवलपमेंट आप आज भी देखते हैं, ठीक है, रेलवेज, ठीक है, रेलवेज का डेवलपमेंट का इंपॉर्टेंट कारण था ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स जो उन्होंने करवाया। लैंड रिक्लेमेशन, अभी हम लोग जो बॉम्बे देखते हैं, हम लोग बहुत सा पानी देखते हैं, पर पहले बॉम्बे वैसा नहीं था, क्योंकि पहले सिर्फ ज्यादातर पानी था, उस पानी के ऊपर जमीन आ गया है। हम लोग जो बात करते हैं ना मरीन ड्राइव के बारे में, वन ऑफ इंडियाज मोस्ट ग्लैमरस स्ट्रीट्स, वो करीबन 100 साल पहले पानी होता था। उसको हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स लीडर्स ने जमीन बनाया और एक अच्छा सा रोड बना। शाहपुर जी पालन जी ने बनाया था। और ये सब जो पैसा इन्वेस्ट हो रहा था वो था क्योंकि पैसा बहुत बना कॉटन में और ओपियम में। आफ्टर इंडिपेंडेंस इज वेयर थोड़ा ये टर्न आ गया कि ओपियम तो पहले बंद हो गया था, टेक्सटाइल्स वेंट थ्रू अ बैड बैड फेज, और उसके बाद वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी केम इन टर्म्स ऑफ थिंग्स लाइक फाइनेंशियल सर्विसेज एंड रियल एस्टेट। इसके वजह से आज जो हम सबसे ग्लैमरस बिल्डिंग्स देखते हैं मुंबई के, वो पहले टेक्सटाइल मिल्स होते थे जो पूरे बैंकरप्ट हो गए और उसको बेचना पड़ा। और बेचने के बाद वो घिसे पिटे टेक्सटाइल मिल्स बन गए हैं आज के इन अ वे ताजमहल्स, जहाँ पे द richest of the rich stay there. So that's broadly the journey of Bombay from being a dowry, from just being a dowry to being a opium and cotton hub to now becoming a financial and real estate hub. Uh, and still today also, मैं आपको बताना चाहता हूँ, काफी लोग को ये नंबर पता नहीं होगा कि सिर्फ मुंबई की रियल एस्टेट वैल्यू, ओके, रियल एस्टेट वैल्यू, द वैल्यू ऑफ ऑल हाउसेस इन मुंबई इज $1 trillion. Wow. So this is something really, really, really good, and specifically for our viewers who are specifically into stock market, this is something mind-boggling, something very difficult to digest. So आपने बहुत अच्छे तरीके से सेशन को स्टार्ट किया है। अमेजिंग स्टोरी, अमेजिंग नंबर। बट अभी तक हमने सिर्फ मुंबई की बात की है। अगर थोड़ा सा ब्रॉडली अगर हम लोग बात करें कि इंडिया के रियल एस्टेट मार्केट, और स्पेसिफिकली जैसे आपने 2009 का बात किया कि उस समय ही आपने ज़्यादा इंटरेस्ट लेना चालू किया, तो हम लोग तब से लेके अभी तक की अगर खास करके बात करें कि ओवर द लास्ट डेकेड और सो, हाउ डू यू सी दैट ट्रेंड्स हैव चेंज्ड, कैसे इवॉल्व हुआ है, और आगे क्या दिख रहा है आपको इसके हिसाब से? देखिए 2009 में तो होम बायर बैठा था इंडिया में लुटने के लिए। कुछ प्रोटेक्शन नहीं था उसको, कुछ प्रोटेक्शन नहीं था। ठीक है। वो एक गैम्बल था। अगर आपने पैसा दिया बिल्डर को और आपको घर मिला, वो आपका नसीब है। ठीक है। आपको जितना भी आपको रिसर्च करना है ना, आप कर लेंगे, फिर भी आप कुछ ना कुछ रॉन्ग हो सकता है।
ठीक है, और बहुत कुछ रॉन्ग हुआ। फॉर्चुनेटली 2014 के बाद हम लोगों ने बहुत सा रेगुलेटरी प्रोटेक्शन देखा है इस सेक्टर में। ठीक है, चाहे वो रेरा हो, जीएसटी हो, डिमोनेटाइजेशन टू एन एक्सटेंट हो। क्योंकि पहले इतना वॉलेटिलिटी क्यों होता था, ठीक है, मार्केट में? क्योंकि बहुत से इंटेंजिबल फैक्टर्स होते थे और बहुत से हिडन फैक्टर्स होते थे, जिसकी वजह से अ, एक इंफॉर्मेशन असिमेट्री होता था। ठीक है, अ, जो मुझे पता है वो आपको पता नहीं है। ठीक है, और वैसा नहीं है कि आपका एक विजन है कि आप जानते हैं दूसरे के बारे में। आपको बस पता है कि मैं इस पे क्या लूपहोल को एक्सप्लॉइट कर सकता हूँ। ठीक है, जिसकी वजह से अक्रॉस इंडिया, ठीक है, बहुत से प्रोजेक्ट्स अटक गए। बहुत से होम बायर्स गॉट ट्रैप्ड। ये मैं बोल रहा हूँ फ्रॉम शहर फ्रॉम मुंबई टू गुड़गांव टू हैदराबाद टू इवन एक्सटेंट लाइक बैंगलोर। ठीक है, पुणे ऑल्सो। तो एक बार ये थोड़ा रेगुलेटरी प्रोटेक्शन आ गया, तब हमने देखा द राइज ऑफ कॉर्पोरेट बिल्डर्स या ब्रांडेड बिल्डर्स, अगर आप बोले तो। ठीक है, नहीं तो 15 साल पहले कौन कौन से ब्रांड्स थे रियल एस्टेट में? कोई नहीं था। ठीक, और अगर थे तो इतने छोटे नाम पे थे कि इट वाज नॉट इवन वर्थ मेंशनिंग। तो दिस क्लीन अप ड्रोव दिस फेज जहां पे कॉर्पोरेट डेवलपर्स कुड कम इन, could participate, could get a premium from the buyer, and then could possibly deliver to a degree of satisfaction for a home buyer. तो अगर आप मुझे पूछेंगे कि which has been the best phase to be a home buyer in India since independence, मैं बोलूंगा the last 10 years. ठीक है, and I think मुझे एक चीज I must concede that this current government, this current leadership has actually been very very pro buyer, बारिंग द टैक्सेशन जो आजकल थोड़ा वो कंट्रोवर्सी हो गया था। मैं अभी तक याद रखता हूँ, एक क्रेडाई का समिट था अंकित जी, इन 2018 एंड या 2019। ठीक है, मोदी साहब गए थे क्रेडाई में। क्रेडाई इज द रियल एस्टेट एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स। ठीक है, और उन्होंने सब डेवलपर्स को ऑन स्टेज, ठीक है, ऑन स्टेज बोला कि अगर आपको लगता है कि कुछ बदलने वाला है मेरे जाने से, या मोदी चले जाएगा, उसके बाद जो पहले होता था वैसे कर देंगे ना, कुछ बदलेगा नहीं। ठीक है, इट विल ओनली गेट स्ट्रॉन्गर। ठीक है, और मैं जब वो वीडियो देख रहा था, आई कुड सी व्हेन ही वाज सो स्ट्रांग, एंड सब बिल्डर शॉक थे। जैसे जब लीडर्स जाते हैं ना एक एसोसिएशन समिट में, सब लोग अच्छी अच्छी बातें करते हैं ना, आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इंडिया को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, हाउसिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। ही इवन एट द पीक ऑफ इलेक्शन साइकिल कुछ बदलने वाला है। एंड आई थिंक दैट लीडरशिप हैज हेल्प्ड अ लॉट, क्योंकि तब आई थिंक बिल्डर्स हैव आल्सो अंडरस्टूड कि ये जो जुगाड़ का खेल है ना, वो ज्यादा टिकने वाला नहीं है। आपको स्ट्रक्चरल चेंजेस करने की जरूरत है, एंड दैट आई थिंक बिल्डर्स हैव डन टू अ गुड एक्सटेंट। और यहाँ पे आई मस्ट से दैट द टू सिटीज व्हिच हैव रियली अप देयर गेम, ठीक है, आर मुंबई एंड बैंगलोर। ठीक है, मैं ज्यादा एनसीआर की बात नहीं करूंगा क्योंकि आई एम नॉट अ, क्योंकि वो मुझे बहुत शैलो मार्केट लगता है। इट्स नॉट अ वेरी mature market. It's a it's a tier 1 market that behaves like a tier 3 market for me. तो but Mumbai and Bangalore, those two geographies have done very well, which is why मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा ग्रोथ और स्टेबिलिटी वहां पे आएगी। वॉल्यूम अच्छा रहेगा, वैल्यू अच्छा रहेगा, ठीक है, प्राइसेस ऊपर नीचे होंगे लाइक एनी अदर एसेट, बट those two will be the big markets to watch out for even in future despite their strong base. क्या कोइंसिडेंस है, आप मुंबई में बैठे हो, मैं बैंगलोर में बैठा हूँ, और Hmm. आप ये दो मार्केट की बात कर रहे हो। नहीं, आई थिंक मुंबई बिल्डर्स अंकित जी हैव अ लॉट टू लर्न फ्रॉम बैंगलोर, क्योंकि बैंगलोर ने जैसा द क्वालिटी ऑफ डेवलपमेंट एट द प्राइस पॉइंट, इट इज बैंगलोर इवन बिफोर इट बिकेम टुडेज हैवीवेट बैंगलोर। मुझे हमेशा लगता था कि बैंगलोर वाज अ टीयर 2 मार्केट
that behaved like a tier 1 market, and NCR was a tier 1 market that behaved like a tier 3 market. राइट राइट। नहीं तो अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके एक पॉडकास्ट से है। आपने अभी रेरा, जीएसटी, रेगुलेशंस और उससे कैसे सेक्टर स्ट्रक्चर्ड हुआ उसके बारे में बताया। बट आपने ही एक पॉडकास्ट में बोला था कि द बिगेस्ट डिस्रप्शन टू मुंबई रियल एस्टेट मार्केट वाज नॉट डिमोनेटाइजेशन, नॉट जीएसटी, नॉट रेरा, बट द एक्शंस ऑफ अ बीएमसी कमिश्नर इन 2012। I would now request you to expand on that because that would be very useful for our viewers. देखिए, इन 2011-2012 एक बीएमसी कमिश्नर थे, मिस्टर सुबोध कुमार। ठीक है। ठीक है, उसके पहले द बिगेस्ट स्किल ऑफ अ बिल्डर वाज एफएसआई मैनिपुलेशन। ठीक है। एफएसआई का मतलब क्या है कि मेरे पास अगर 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है और अगर एफएसआई 4 है, मतलब आई कैन कंस्ट्रक्ट अप टू 4000 स्क्वायर फीट। ठीक है। नाउ तब तक क्या होता था, ये एक स्कैम होता था बैल्कनी फ्लावर बेड का। बिल्डर बोलता था बीएमसी को कि मैं एक 1000 स्क्वायर फीट का घर बेच रहा हूं अंकित को, और वो अंकित को जाके बोलते हैं कि 1000 स्क्वायर फीट का घर यहाँ पे है और उसके ऊपर एक 500 स्क्वायर फीट का बैल्कनी है। ठीक है। और वो 500 स्क्वायर फीट नहीं होता था बैल्कनी में, तो आप मुझे 1500 स्क्वायर फीट के अनुमान में मुझे अपना प्राइसिंग दीजिए। ठीक है। जो बिल्डर्स के पास ये नेक्सस था वो 1500 स्क्वायर फीट बेचते थे अंकित को। जिसके पास ऑनेस्ट क्लीन करना होता था वो 1000 स्क्वायर फीट करता था। पर कॉस्ट एडवांटेज वाज विद द पर्सन जो क्रोकेट था। 2011-2012 में सुबोध कुमार जी आए और उन्होंने बोला जो करना है, बैल्कनी बनाना है, टेरेस बनाना है, जो बनाना है, सब कुछ एफएसआई के अंदर आ जाएगा। तब इट बिकेम अ लेवल प्लेइंग फील्ड। Right. एवरीबडी स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो। ऐसे नहीं कि अंकित स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो, विशाल स्टार्ट्स फ्रॉम 500 स्क्वायर फीट, बिकॉज 500 स्क्वायर फीट का उसका बैल्कनी है। एंड दैट in a way has laid a very strong foundation for Mumbai. It made Mumbai healthy. It made Mumbai cleaner. Uh, it made Mumbai a preferred choice for corporate developers. ठीक है। uh, बहुत से बड़े developers who earlier were at a disadvantage became competitive and became strong. तो मुझे मेरी राय में if every honorable builder जो चोर नहीं है ना, he should every year send a thank you note to Subodh Kumar. ठीक है। He was there just for 1 year, huh? Ankit ji, और आप, this is a good learning to also have कि it's not about how long your tenure is. लोग को लगता है कि मेरा टेन्योर छोटा है तो मैं कुछ नहीं कर पाया। 1 साल के अंदर to do that level of disruption, that has changed Mumbai real estate so much for the better. उस वक्त बहुत लोग उनको गाली देते थे। ठीक है। आज जब मैं उन्हीं लोगों से बात करता हूँ ना, they thank him. Right, right. No, this is very, very, very useful. So now shifting gears. So whatever little we at SmartSync Services could read and understand about the sector, and recently we have also released a video from our side. And I'm talking from the perspective of a public market investor, right? So the following tailwinds come to our mind. So I'll just read out all those or uh, uh, speak out all the tailwinds which we found out. आपको किसी पे भी expand करना हो या आपको लगता है कि we missed out on any tailwind, so let's discuss that also at length. So number one which comes to mind is the strong demand momentum with low inventory hanging overhang. Okay, जो पहले एक inventory का overhang होता था वो आज के दिन, if you look at the last 10-15 year history, that overhang is far less compared to the history, recent history I'm talking about, last 15 years. Second is the affordability is the strongest it has been in the last 15 years. थर्ड इज इंटरेस्ट रेट साइकिल में अगर हम लोग जितना भी थोड़ा बहुत समझ में आता है, आई एम नॉट अ मैक्रो एक्सपर्ट अगेन, बट प्रोबेबली इंटरेस्ट रेट एक जगह पे पीक हो चुकी है। कब गिरेगी, कितना गिरेगी, दैट इज डिबेटेबल, बट प्रोबेबली फ्रॉम अ डायरेक्शनल पर्सपेक्टिव वी आर गोइंग टू सी इंटरेस्ट रेट गोइंग डाउन फ्रॉम हियर, right? Then consolidation, share of top developers or organized या branded developers जैसा आपने भी अभी बोला, that have also increased over time. And developers leverage has come down drastically in the last 10-15 years.
And one which is very important, which I think a lot of large real estate listed companies have commented in their recently uh, declared quarterly results conference call, जहाँ पे उन्होंने बोला कि the market is probably shifting from primarily an investment driven to an end user driven. So मैंने 5-7 पॉइंट्स आपको बोला है, आपको किसी पे भी एक्सपैंड करना हो या आपको लगता है कि मैंने कोई मिस किया है, इट वुड बी ग्रेट टू लर्न फ्रॉम यू इन टर्म्स ऑफ टेलविंड्स व्हिच वी सी इन द सेक्टर. देखिए, जैसे आपने कहा कि इन्वेंट्री ओवरहैंग काफी कम है, दैट इज ट्रू. हाउ लॉन्ग इट विल बी एन इन्वेंट्री ओवरहैंग, वो मैं आप आई थिंक आई शुड हाईलाइट कि रियल एस्टेट एक ऐसा साइकिल है कि जब मार्केट ऊपर चढ़ता है ना, प्रोजेक्ट एक्विजिशन गोज अबाउट 2x to 3x एट फास्टर स्पीड. ठीक है, वैसा नहीं है कि अगर आपने मार्केट स्टेबल है, इन्वेंट्री नीचे गिर गया क्योंकि सेल्स इतने स्ट्रांग है, वेरी क्विकली, बिकॉज इन रियल एस्टेट द बैरियर टू एंट्री काफी लिमिटेड है ना, इमीडिएटली न्यू सप्लाई विल स्टार्ट गेटिंग प्लान्ड. ठीक है, तो डिमांड सप्लाई ऐसे, ठीक है, डिमांड बढ़ा, सप्लाई गॉन डाउन, वेरी क्विकली सप्लाई विल एडजस्ट. ठीक है, एंड at any given point of time, then when the demand starts dropping now, this imbalance will come. And in real estate, uh, one big issue with demand supply mismatch is that builder का holding capacity is often very limited. ठीक है, मैं जानता हूँ ये बहुत से narratives लोग मुझे बोलते हैं builder mafia, they can hold on for the next 20 years, 15-20 साल, वो सब बेवकूफी है. ठीक है, मैं आपके लिस्टेड कंपनीज में इतना देखता हूँ, एवरी नाउ एंड देन दे आर द फास्टेस्ट फैक्ट्रीज, वो तो कभी रुकते ही नहीं है. इफ दे हैड द होल्डिंग पावर, वो एक ही प्राइस पे बैठते ना, नहीं करते. तो वंस वी अंडरस्टैंड दिस रियलिटी कि दिस डिमांड सप्लाई इम्बैलेंस चेंजेस वेरी फास्ट इन रियल एस्टेट, क्योंकि टू स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है, तो अंकित जी क्या है कि रियल एस्टेट इज द अल्टीमेट हर्ड मेंटालिटी बिजनेस. मैं प्रोजेक्ट क्यों कर रहा हूँ व्हाइटफील्ड बैंगलोर में, ठीक है, क्योंकि अंकित ने इतना बड़ा प्लॉट वहां पे लिया है, यहाँ पे तो बहुत तेजी है. ठीक है, और पूरा इकोसिस्टम क्या होता है कि सबके इंटरेस्ट में है कि प्रोजेक्ट शुरू हो जाए. ठीक है, ब्रोकर्स का, कंसल्टेंट्स का, लेंडर्स का, सब लोग, तो सब लोग इतनी बड़ी बड़ी कहानी बनाते हैं. तो प्रोजेक्ट एक्विजिशन हैपेंस एट 3x 4x द स्पीड इन अ गुड टाइम. वी आर इन दैट फेज नाउ. ठीक है, तो इफ आई वाज एन ऑब्जर्वर ऑफ द मार्केट, I would not be very comfortable if there is an inventory overhang which is little, but project acquisition is happening at record speed. ठीक है, combined with this, affordability जैसे आपने कहा एक tailwind था, affordability has been good. ठीक है, I don't think affordability is very healthy now. Okay, in 2021 it was good, 2022 it was okay. अभी क्या, there are two three things that have happened. One is costs have gone up. ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द सिटी यू आर. अगर मैं मुंबई में बोलूं, from the lows of 2020, prices are up about 40 to 50%. In NCR, prices, if I look at projects in Gurgaon, Noida, the new ones are up 70 to 150%. ठीक है, तो prices have gone up, supply is high. Uh, what happens now? ठीक है, because सब लोग अभी वही स्टोरी के ऊपर पकड़ रहे हैं ना कि अफोर्डेबिलिटी इतना अच्छा है तो लॉन्च करो, let me raise the price. And I think now we are at the stage where affordability is not very strong. Okay, the first signs have started coming, I think, in the last 9 months to 12 months, according to me. And uska best symptom, आप monitor कीजिए payment schemes. That is the first signal from a developer that things are getting weak. Okay, and this is now happening across the board in most cities. सब लोग ने अपना शुरू कर दिया 20-80 scheme, pay 20 now, 80 on possession, pay 15% now, 85%, या 20-20-20 schemes जो थे. ठीक है, so I think now we are in that zone where we should not work with the old parameters, economic parameters of affordability being high, low inventory overhang. आपने कहा consolidation के ऊपर, in fact,
there is a very there is a dichotomy in the real estate business कि अगर मार्केट में तेजी है ना तो कंसोलिडेशन कभी नहीं होगा, क्योंकि बैरियर्स टू एंट्री आर इजी इनफ दैट जब मार्केट तेजी है ना, अरे यार जिसने धंधा छोड़ा था ना वो वापस आ जाएगा, क्योंकि व्हाट यू नीड टू बी अ डेवलपर इन वन वे, थोड़ा ब्रांड, you need to either have a your own land parcel or an access to land, capital is reasonably okay to start the project and get going. So this year, in my view, in a market like Mumbai, we are seeing deconsolidation. The market share of the top 20 developers in the business will be lower this year than the last year. क्योंकि जो सब छोटे छोटे प्लेयर्स थे ना, जिसने जो मेरे को जो मुझे बोलते थे 2020, विशाल जी मुझे धंधा छोड़ना है, कुछ नहीं यहाँ पे, इतना मारा मारी क्यों कर रहे हैं हम लोग, कुछ पैसा ही बनता नहीं है, उसके ऊपर गाली सुनो, वो सब आ गए, वो सब आ गए, और पहले 2 प्रोजेक्ट करते थे, अभी 5 प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इन माय व्यू, while the situation is steady, I think now is a good time to start being cautious. यूफोरिया तो बिल्कुल निकल गया मार्केट से। ठीक है, जैसे मैंने कहा, एक बार आपने पेमेंट प्लान देख लिया मार्केट में, ठीक है, एंड वो सबसे इजीएस्ट चेक होता है, you know that things are starting to slow down. राइट। नहीं, दैट वाज वेरी यूजफुल। सो कुछ चैट बॉक्स में भी पीपल आर आस्किंग क्वेश्चन, बट आई टेक दोस क्वेश्चंस टुवर्ड्स द एंड। बट एक क्वेश्चन था, क्योंकि आपने अभी रिसेंटली बोला था उसके ऊपर में, विच वाज क्या टीयर 1 मार्केट बिहेविंग लाइक अ टीयर 3 मार्केट। सो समवन इन द ऑडियंस इज आस्किंग दिस, व्हाट डू यू, कैन यू एक्सपैंड ऑन दिस? मुझे तो देखिए, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 मार्केट, to be honest, I know, there's no fixed definition. It's very subjective. I use tier 1 in the way of the top 10, top 8 markets of India, which includes mainly the metro cities that are there. Bombay, Bangalore, NCR, Hyderabad, Pune type and all. So tier 3 market, I mean the markets which are a bit like Jaipur. ठीक है, nothing against Jaipur as a city. मैं भी जयपुर से आया हूँ, इनफैक्ट आई लाइक द सिटी, बट इन टर्म्स ऑफ मेच्योरिटी, in terms of how they plan, their organization strength, the way they look at the business, I mean it in that way, and of course the size. So in that way, NCR, जब मैं reference, I know you are asking context of because I made the mention of NCR. Tier 1 wise अगर आप देखेंगे तो NCR is a market which is half the size of Mumbai, which is very big. Okay, मेरा approach था कि while it is maybe 40-50% of Mumbai as market in size, its behavior as a market is very very weak, and that is a tier 3 type market की कुछ भी कर दो, you know, कुछ भी scheme कर दो, कुछ भी मिस सेलिंग करो। Got it. No, that was very helpful. So moving on to the next segment, where I'm going to ask you about what, according to you, are the biggest challenges faced by the Indian real estate sector today. आपने पास्ट का तो बताया कि कितने प्रॉब्लम्स है और वहां पे अभी सब कोई लेवल प्लेइंग फील्ड में आ गए, बट अगर आज की बात करें तो व्हाट आर द बिगेस्ट चैलेंजेस यू थिंक the sector is facing, and how are developers and other stakeholders addressing those challenges according to you? देखिए, सबसे बिग, आई थिंक देयर टू बिग इश्यूज हियर नाउ। वन इज दैट कंपटीशन काफी बढ़ गया है। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि इन अ स्ट्रॉन्ग मार्केट बहुत से प्लेयर्स वापस एंटर करते हैं मार्केट। एट दैट पॉइंट, हाउ डू यू डिफरेंशिएट योरसेल्फ? ठीक है, क्योंकि टू अ लार्ज एक्सटेंट ज्यादातर रियल एस्टेट एक कमोडिटी है। ठीक है, सब बिल्डिंग ज्यादातर लुक द सेम ना। मैं आई एम फ्रॉम बैंगलोर, मैं आपके 1-2 बिल्डर्स को निकाल दूं, जैसे टोटल एनवायरनमेंट टाइप। ठीक है, बिल्डर ए एंड बिल्डर बी के प्रोजेक्ट में ज्यादा फर्क नहीं होगा इफ द प्लॉट साइज द सेम। ठीक है, तो हाउ डू यू डिफरेंशिएट एंड सेल इन दैट एनवायरनमेंट? नंबर 2 इज इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट्स। ठीक है, इन दिस बुल मार्केट, नो, जो लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग मार्केट, दी कॉस्ट ऑफ योर रॉ मटेरियल राइजेस डिस्प्रोपोर्शनेटली। क्योंकि जो जमीन आपको बेच रहा है ना, आप तो हवा में लोग को बोल रहे हो अभी रेट हो गया है 30,000 रुपए पर स्क्वायर फीट। अभी जब आप लैंड खरीदने के लिए जाओगे ना, वो लैंडर बोल रहा है ठीक है अभी का रेट 30,000 है, तो उतना तो मेरे को रेट चाहिए लैंड का वैल्यू, जब तक टाइम यू बिल्ड इट विल बिकम 35,000।
so pay me more. और क्योंकि इतने बिल्डर्स compete कर रहे हैं वो लैंड के लिए ना, वो लैंड का रेट बढ़ जाता है. Same thing when it comes to other real estate services, be it the contractor, be it the labor, be it the equipment. क्योंकि the same number of players or same number of equipments are being chased by more number of players, so their rates go up. So for a builder, his cost of operation has risen a lot. So in a way, he's caught in a double trap. There is too much supply, okay, to get the consumer, but there is too much demand to buy my raw material. So your margin flexibility becomes very limited. So I think we are now in that zone, actually, which is why मुझे लगता है कि अगले 12 महीने जैसे the market has shown good enough signs that it's not as strong as it was earlier, we will see a lot of developers say in management commentary कि मेरे पास option ही नहीं है to cut prices क्योंकि मेरे costs इतने बढ़ गए हैं. ठीक है, जो एकदम savvy developers है ना, they will go about their job. And I think in that, if there is one developer who really has been the pioneer in how real estate business should be done, it's actually Lodha, Macrotech. He treats it like a real estate business, manufacturing. I will adjust my price based on the demand. तो बहुत से लोग का वो सोचे ना, अरे मैंने ये रेट पे बेचा था लास्ट, अब मैं तो I have to sell at that rate only. क्यों? There is a particular rate, every month it changes, every day it changes. What's the problem? So I think now those are the two things I will be watching out for. As demand slows and supply rises, what happens? Right. That's a very, very, very valid and pertinent point you have made here. And if I have to put a follow-up to this question or this answer of yours, is that what we have understood as public market investors is that real estate has long cycle compared to any other commodity. If you look at, say, steel or sugar or any other commodity, I'm talking from a stock market perspective. So real estate generally, whether it is up cycle or down cycle, it lasts a longer time. So whatever concerns you are raising right now, is it fair to say that these are all short-term concerns which will probably get ironed out in a year or so, and we'll resume this real estate rally which we have been seeing post-COVID? Is it fair to say something like that, or you have some other opinion? देखिए cycles का क्या है ना कि अंकित जी, I think it's mostly in my view, if you look at the cycles over the last whatever 130 odd years, say, across different countries, of course, is that the duration of cycles has actually become shorter, but the intensity in that cycle has risen. तो पहले जो माल जाता था 10 साल में, अब वो माल जाता है 5 साल में. ठीक है, but the cycle has shortened from 10 years to 5 years. So we should not assume now the cycle will be 10 years. ठीक है, एक वक्त होता था in the 1900s, early 1900s in some geographies, cycle used to be 18-20 years. And this was despite wars being there, no? But then we gradually moved as more and more capital became easy, regulation became stronger, it became a war-free world in a way. Things became stable. So people had visibility. So if people used to earlier say कि अगर मैं घर 5 साल के, instead of taking it 5 years from now, I'll take it now. Because now I have things like mortgage, I have certainty, job security, जो भी है. So this 7-year cycle, I think I'll be very surprised if this 7-year cycle, so I read that a lot in stock market reports, I must confess. And I don't think we should work with 7-year cycles. The cycles will keep getting shorter, but more intense. Which is the reason if people, okay, our volumes, depending on the geography where you are up about 30 to 70%. Okay? In a normal cycle year, it would be 15% growth, 18% growth per year. But we have covered much faster distance. Right. Which will ensure that we don't need to wait for 7 years. The action will happen in 4 years, 5 years. Things will stabilize after that. Uske baad, it depends on the
developers to ensure that demand sustains. ठीक है, इंडिया में there has never been an issue of demand, never. There's always been an issue of supply, quality of supply and the quantity of supply. ठीक है, Right. If we address those two parts, then I think we will always have a steady amount of growth, 8-10% growth every year. We can continue that. But for that, we have to keep our quality, quantity, and pricing of supply right. Right now, I see that there is imbalance. Right. And I think who better to understand this phenomenon of cycle getting shorter than public market investor. We have seen that in the stock market as well, where the intensity is probably going up. The volumes at which we trade today and the velocity with which the volatility happens is only going up, but the cycles are actually getting shorter. So we kind of understand what you are saying and agree with that to a certain extent. Now, moving to a completely different segment, since you are a real estate expert, this question inevitably will come. अगर मैं नहीं पूछूंगा तो कोई कमेंट में पूछ लेगा कि जो होम के लिए हम लोग जनरल जो ये सोशल मीडिया में भी काफी डिबेट चलता है, कितने इन्फ्लुएंसर लोगों ने कितने वीडियोस बना दिए है इसके ऊपर कि वेदर टू बाई और रेंट. एंड आई रिमेंबर इन वन ऑफ योर पॉडकास्ट और मे बी यू वर द होस्ट इन दैट सेशन वेयर यू interviewed a mutual fund manager who is paying 3 lakh rupees per month as rent in Mumbai. So that was very interesting. I really like that thing. And so आपसे यही पूछना चाहूंगा, what is your view on buy or rent in terms of house? अगर कोई viewer देख रहे हो और if you want to use this as a medium to educate him on that, what would be your advice? देखिए, instead of rent versus buy, I am now a big believer in the philosophy of rent before buy. ठीक है, I do not recommend people to buy a house early. ठीक है, बहुत से लोग बोलेंगे buy a house quickly. Never do that. Never do that. Okay, you should not buy a house before the age of 35, in my view. At the same time, जैसे आपने जिक्र किया ये इन्फ्लुएंसर जो रेंट चिपकाते हैं स्टोरी, आई एम नॉट अ बिग बिलीवर इन दैट ऑल्सो. ठीक है, यू हैव टू रेंट बिफोर बाय. तो जहां पे आपको रहना है आप वहां पे रेंट कीजिए. If you like the environment, like the society, like your neighbors, like the amenity, then buy something over there itself. ठीक है, so between rent versus buy, I don't get into that debate anymore because एक बहुत individual चीज है. But if I have to guide somebody, I always tell them, you must rent before you buy. ठीक है, you may need to, if you're in tower 1 of a project, you may need to buy in tower 9. It's okay. Prices थोड़ा ऊपर नीचे होगा. ठीक है, but I'm also a big believer it's better to actually buy at a slightly higher price, but buy a ready property. If you don't have risk appetite to take the risks of a under construction project. Right. क्योंकि आपको याद रखना एक चीज कि never ever be in the position where you put all your money into one asset and that one asset is the riskiest purchase for you. ठीक है, अंडर कंस्ट्रक्शन आपको मान के चलना है कि डिसअपॉइंटमेंट होगा. ठीक है, मुझे मुझे बहुत से लोग बोलते हैं कि विशाल यू आर वेरी नेगेटिव एंड पेसिमिस्टिक. I don't know whether I'm negative or pessimistic. I'll be wrong to judge myself. I form my opinions based on what I hear from so many buyers. ठीक है, and in that I am very clear. Do not buy under construction if you can't take the risks associated with it. It's better to buy late, buy ready, even at a 20% premium, or buying a smaller home, or buying a location slightly away from where you initially thought. It's better to do that. Right. And under construction property to buy karna, I think you're not being a consumer, you're being an investor then. So you're taking a call as an investor. So मैं जब ये question पूछ रहा हूँ, I'm talking from a consumer point of view, and you'll be happy to know at least एक बंदे ने तो आपकी advice ले ली. वो हूँ मैं खुद. बैंगलोर में मेरे जो प्रॉपर्टी है मैं पहले 1.5 साल वहां पे रेंट पे था, एंड वहां पे रहने के बाद the landlord was a very gentleman. He asked me that he wants to sell it,
but he wants to give me the first chance. So I moved around and I looked at the other properties where I could rent the properties, and I never found any property as good as the one I was living in. And मैंने कैलकुलेशन किया, कैलकुलेटर निकाला, मैं बोला यहाँ पे रेंट जिस हिसाब से बढ़ रहा है, और आज मुझे अगर मैं इस पे थोड़ा लोन भी लेता हूँ, so whatever my EMI comes to, and I most importantly I like the house. I have stayed here for 1.5 years and I now understand the whole locality. So it makes, जबकि मैं आई एम अ पर्सन हु वाज ऑलवेज अगेंस्ट बाइंग हाउस प्रॉपर्टी, मैं रेंट पे बिलीव करता था, बट जब सिचुएशन चेंज हुई आई चेंज माय माइंड. सो आई एम देखिए हैप्पी टू हियर दैट यू आर आल्सो सजेस्टिंग द सेम थिंग. देखिए when the facts change you have to change your view. Yeah. अगर I think in markets like Bangalore where rents have gone up so much, Yes. the biggest driver for home buying are actually landlords in Bangalore. वो इतना थका देते हैं टेनेंट्स को कि टेनेंट सोचते हैं कि छोड़ो यार ये सब घर खरीद ही लेता हूँ, ठीक है. Right. Right. तो आई एग्री विद यू ऑन दैट. देखिए इन दिस साइकिल आई आल्सो मस्ट टेल पीपल, सिंस आपने कंज्यूमर रिलेटेड क्वेश्चन पूछा, कि जब आप घर खरीद भी रहे हैं ना, आपको याद रखना है कि आपके साथ में कोई नहीं है. Right. देयर इज नोबडी ऑन योर साइड, नोबडी. एवरीबडी will will want you to buy the house because you're a bakra. Everybody makes money when you buy a house. ठीक है. सोचिए इन मेनी मार्केट्स, ठीक है, ये थोड़ा इम्बैलेंस हुआ ना. आप यू आर फ्रॉम बैंगलोर, तो मैं आपको एक शेयर का एग्जांपल यूज करता हूँ. या इट्स नॉट दैट सडनली बैंगलोर में so many more people have started coming to work that the rent should have gone up so much. The number of tenants have not multiplied, but all of them have come at the same time where there was an opportunity for the ecosystem to extract more from everybody. It's not कि when you say आपके 40% your rents have gone up, 50% rents have gone up, it's not as if suddenly 35% more tenant base has increased. नहीं, it may have increased 8, 10, 12%, but why should go 50%? मुंबई के मार्केट पे you see a situation where rents have gone up because of redevelopment. इतनी बिल्डिंग्स टूट रहे हैं रीडेवलपमेंट में, तो पहले का जो ओनर था वो ओल्ड बिल्डिंग में वो भी टेनेंट बन गया, और वो बिल्डिंग्स में जो स्टॉक था रेंट के लिए वो टूट गया, तो सप्लाई कम हो गया रेंटल स्टॉक, बट नंबर ऑफ रेंट्स हैव रिजन, नंबर ऑफ टेनेंट्स हैव रिजन. Right. सो देयर इज एन आर्टिफिशियल डिस्टॉर्शन. ठीक है. नाउ अगर अगर ऐसा चीज है, लॉजिकली आपको सोचना चाहिए कि ब्रोकर आपको बोलेगा कि सर ये तो लॉजिक है ना कि रेंटल स्टॉक इज डाउन, नंबर ऑफ टेनेंट्स आर अप, तो रेंट शुड गो अप. मैं उनको हमेशा उल्टा पूछता हूँ. ठीक है, अग्रीड. अभी सेम थिंग रीडेवलपमेंट, मोर नंबर ऑफ हाउसेज आर कमिंग, ठीक है, बाय मोर नंबर ऑफ प्लेयर्स. द ओल्ड द अभी के जो टेनेंट्स हैं दे विल गो बैक टू बिकमिंग ओनर्स इन द रीडेवलप्ड बिल्डिंग. Right. If there is so much supply, okay, and number of buyers pretty much remain the same, then prices should come down, no? Right. The same counter you do it. At that time, nobody will be on your side. नहीं नहीं सर, रियल एस्टेट थोड़ी ना इकोनॉमिक्स पे चलता है, इट वर्क्स ऑन इमोशन, ये वो करते रहते हैं. तो एज अ कंज्यूमर आई ऑलवेज टेल पीपल, you are the loneliest person on the street. When you are walking, you think you are a man walking. You are not. Everybody around you is thinking of you as a bakra. You play your cards according to that, knowing that reality. No, that's a very, very, very important advice for anyone who is looking to buy a home, and specifically at the start of their career, or maybe at the early stage of their career, right? So now, हमारे व्यूअर्स या आज के ऑडियंस देख लो, या यूट्यूब में जो हमारे रिकॉर्डिंग को देखेंगे, almost 100% are stock investors. So I cannot let you go before you giving us your view on the real estate stocks. So I'm not asking for any recommendation. हम लोग ये प्लेटफॉर्म पे कभी भी recommendations की बात ही नहीं करते. But what attributes would you look at today in a real estate company from a stock market investing perspective? And also what attributes you would not like to see in a real estate development company? So मतलब कौन से तरीके के stocks, without even naming them, कौन से तरह के कंपनीज को आप कंप्लीटली अवॉइड करोगे और कौन सी कंपनीज को आप खरीदने की कोशिश करोगे?
Let's put valuation aside at the moment. Of course, valuation matters when you are investing in the market. But for this question, let's put valuation aside. खाली कंपनी और बिजनेस की बात करें तो किस तरह की बिजनेस आपको अच्छे लगेंगे और किस तरह के बिजनेस को आप कंप्लीटली अवॉइड करोगे? देखिए, आई विल अवॉइड बिजनेसेस दैट डू नॉट केयर अबाउट देयर रेपुटेशन, ठीक है? क्योंकि जिस प्लेयर को अपने रेपुटेशन के बारे में फर्क नहीं है ना, उसको कुछ रह रहा है, जीएसटी डिमोनेटाइजेशन, कुछ नहीं कर सकता, ठीक है? बिकॉज ही हैज नो फियर, राइट. वो बदनाम है, ठीक है? सो दोज गाइज यू मस्ट अवॉइड एट ऑल कॉस्ट, ठीक है? अगर वो सबसे सस्ता घर या आपकी लैंग्वेज में सबसे चीपेस्ट स्टॉक भी होगा ना, आपको दूसरी तरफ भागना है, ठीक है? Now, I'm not a stock market expert, but I'm just trying to put this context राइट. question you asked. What type of companies I look at, Ankit ji, I look at companies very favorably that जो बहुत nimble है, जो बहुत fast move करते हैं, who change their strategy based on the environment. उनका वैसा नहीं है कि I plan something in the month of January और वही मुझे 6 month का प्लान है. 6 month का प्लान कोई बिल्डर अगर रखता है ना, he will never succeed, ठीक है? You have to be nimble to monitor yourself every month, every 2 months, every 3 months, and keep changing your strategy according to that. Um, I will look at players who will uh, do construction at a good speed. Okay, if construction is speed is strong now, all the other things fall into place. So I always recommend people that talk to players or go to players where your first visit and your third visit may you can see the difference in construction. Got it. And at an institutional level, I often ask promoters this question: do they take holidays? Because that is to understand can the company work without them, and have they delegated enough for the organization to move quickly? क्योंकि रियल एस्टेट ऐसा फील्ड है ना कि प्रमोटर को लगता है कि मेरे बिना कुछ हो ही नहीं सकता. And that mindset is good if you're doing one project or two projects. Right. The moment you do 4 or 5 projects, it's not sustainable. Right. So you have to be prepared to let go, and you have to have a strong enough team that you can delegate to, जो will carry through your tasks. तो आपने बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स बोले, बट आई एम अगेन जस्ट क्लैरिफाइंग, नॉट आस्किंग फ्रॉम अ रिकमेंडेशन पर्सपेक्टिव, बट कैन यू गिव सम एग्जांपल्स जहाँ पे आप जो ये निम्बल फुटेड वाला आपने एग्जांपल दिया विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. कैन यू गिव सम एग्जांपल, 2-3 एग्जांपल्स वेयर अगेन नॉट अ रिकमेंडेशन बट जस्ट वेयर यू सॉ दैट द मैनेजमेंट वेर very 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 smart and being putting their eyes and ear on the ground, and जैसे जो बोलते हैं ना मार्केट की जो पल्स है उसके हिसाब से वो चेंज हो रहे हैं, just to make sure. So I think understanding the market pulse, in my view, the no one I think has a better pulse of the market than Lodha. Okay. बहुत nimble है, बहुत nimble. I think he is the original disruptor. How to do real estate in this new economy. Okay. उन्होंने they have changed the rules of the game. I think Rustam ji, Keystone Realtors, the company, वो भी काफी they operate in a smaller scale than Lodha, but again very nimble. ठीक है. Then एक छोटा सा, not छोटा सा, a similar level company जो actually is been in real estate in the last 10 years, but been in construction for about 40 years, is a company called MICL. ठीक है. That's a company that जो इंडिया की सबसे tallest building बनाने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है. तो they were earlier contractors, but now developers, and with a good enough track record to construct. They go to markets which are where their brand positioning can help them get a big edge, and their track record can get them an edge. ठीक है. Again, it's a new company in relative terms, a short period, but अभी तक जो उन्होंने किया है, I've been pleasantly surprised. एक चीज, one of the reasons why actually मैंने वो कंपनी को पहले बहुत इग्नोर कर दिया था कि that company was owned by a BJP MP, MLA person, Mr. Parag Shah.
तो लोग जब मुझे बोलते थे कि विशाल यू शुड गो एंड ट्रैक द कंपनी, तो मैं सोचता था कि अरे ये तो पॉलिटिशियन का कंपनी है, क्या करता है, क्या ही करता होगा। एंड दैट्स अ मिस्टेक ऑन माय पार्ट, क्योंकि ही मे हैव बीन अ पॉलिटिशियन बट ही वाज एग्जीक्यूटिंग। Right. और वो टिपिकल पॉलिटिकल धंधा नहीं कि मैं ये रूल बदल दूं, वो रूल बदल दूं, स्ट्रेट फॉरवर्ड डिलीवरिंग स्टफ। ठीक है। तो Okay. दैट इज वन ऑफ द एरर्स आई मेड इन आइडेंटिफाइंग अ कंपनी अ लॉट लेटर देन आई शुड हैव। देन आप मुझे बोल दीजिए कंपनी लिस्टेड से क्या। देखिए गॉडरेज प्रॉपर्टीज, ठीक है। देखिए एक चीज मैं आपको, आई थिंक इट्स अ प्रीटी अनपॉपुलर थिंग टू से, बट इन माय व्यू a lot of people at the consumer level are uh, are not uh, as satisfied with Godrej as they wanted to be. Okay, uh, maybe it's a thing of expectations. ठीक है। उनका एक एपिसोड भी हुआ था गुड़गांव में वेयर वन बिल्डिंग हैड सम स्ट्रक्चरल इश्यूज, यहाँ पे Godrej offered a buyback scheme also from each buyer कि we'll buy it back from you. But as an entity, Godrej's biggest strength is brand, जो ट्रस्ट है। एंड वो रियल एस्टेट में इज अ वेरी पावरफुल फैक्टर, जिसकी वजह से व्हेन दे गो टू द ज्योग्राफीज दे डू वेरी वेल, क्योंकि लोग को पता है कि गॉडरेज है, मैं भरोसा कर सकता हूँ। देन if you can tell me the other names, Ankit ji, I don't know the listed names. What about players like DLF, Prestige, Kolte Patil, Suntech, देखिए डी Shobha? ओके, देखिए डीएलएफ टू मी इज आई थिंक probably the greatest operator of India. Uh, Everybody else is creating a city within a city. They're creating a whole new city itself. And DLF is a phenomenal company. And to see how they have pushed the envelope in terms of real estate construction, um, I could never have thought, Ankit ji, that there would be a building which would be the most expensive, but it would not be in Mumbai. But DLF has done that with a project called Camellias in Golf Course Road. So I think so DLF is a phenomenal company. And because उनके पास debt issues नहीं है, land उनके पास historical है, it's one of those, they are in the sweetest spot. इतना ancestral land है कि उनका cost of construction भी 15,000 20,000 होगा, सब कुछ मिला के, and you can sell it at 60,000 50,000 70,000, जो भी है उनका rate that they aiming for what type of project. देखिए कोल्टे पाटिल, I've been monitoring in recent months. I think some of the buildings that I've seen, I've been pleasantly surprised to see what they are doing. I think if ये जब सब जो बॉम्बे के बाहर वाले जो बिल्डर्स है ना, who are coming to Bombay, Prestige, कोल्टे पाटिल, शोभा की बात है अभी जो हो रही है, पुरवांकरा, these are all Right. players who if they commit to delivering and deliver the project now, they will gain handsomely in markets like Mumbai, okay, and markets like NCR, क्योंकि वहां पे देर इज अ वेरी बिग प्रीमियम टू डिलीवरी ऑफ एन अपार्टमेंट। Right. देखिए अंकित जी, यू आर फ्रॉम अ मार्केट लाइक बैंगलोर, जहाँ पे ज्यादा स्टॉल प्रोजेक्ट्स होते नहीं है, ठीक है। Right. तो मे बी यू विल नॉट अंडरस्टैंड दिस, बट व्हेन यू आर इन अ बायर इन अ मार्केट लाइक मुंबई एनसीआर ना, योर बिगेस्ट कंसर्न इज कि घर मिल जाएगा ना, एंड फॉर दैट यू आर विलिंग टू पे 20% प्रीमियम, क्योंकि आपके माइंड में वो क्या है, ठीक है 20% ज्यादा दिया ना, बट आई कैन स्लीप पीसफुली, घर मिल जाएगा। So I think all these guys, they've begun on the right track. Prestige, I think will be a top 5 builder of Mumbai very soon. Also, okay. DLF very well in Gurgaon. Now coming to Mumbai, I think they'll do very well here also. Uh, Purvankara is not too early to make a call on Purvankara, but I think they're coming in with the right strategy. Okay. So I think yeah, I'd say companies wise, I think जैसे मैंने कहा ना कि अंकित जी की if you are able to deliver in a market like India, sky is the limit. तो
That's what I look, and I think ज्यादातर listed names, to be honest, are reasonably credible. नहीं तभी वो list हो जाते हैं ना. नहीं तो ये fraud word builders I think बहुत ही कम है. मतलब एक दो मैं जानता हूँ हैं, but more or less I think it's a clean field. You get the best behavior from builders who are listed. राइट राइट राइट. नहीं तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोग रियल एस्टेट कंपनीज और खास करके लिस्टेड कंपनीज की बात कर रहे हैं फ्रॉम अ स्टॉक मार्केट पर्सपेक्टिव. सो हम लोग एक इन्वेस्टर कम्युनिटी में ये एक बहुत कॉमन है कि वी इन्वेस्टर्स यूज मार्केट कैप टू लैंड बैंक रेशियो टू इवैल्यूएट रियल एस्टेट कंपनीज. डू यू थिंक इट इज अ रिलायबल मेट्रिक, एंड इफ यस, ऑल्सो व्हाट आर इट्स लिमिटेशंस, इफ यू हैव टू आस्क? देखिए लैंड बैंक का मैं अभी तक समझा नहीं हूँ कि हाउ डू पीपल मेजर लैंड बैंक. ठीक है. ठीक है. लैंड इज वन ऑफ द मोस्ट toughest things to value. ठीक है. So when you do land bank valuation, it probably gives you a certain amount of indication, but in some geographies, your value of your land to your profitability is very low. ठीक है. Let's look at an example like Mumbai. Land values are very high. Profit कुछ नहीं है ना. Because the land values are high, your cost structure is bloated. Because your cost structure is bloated, your scope for profit reduces a lot. मैं काफी बार जोक करता हूँ कि the builder who made the most amount of money in the high profile area of Lower Parel in Mumbai was not the developer, was actually DLF. And they made money by not taking a single floor. उन्होंने जमीन खरीदी 700 करोड़ पे, and 4 years later sold that same zameen for 2,800 crores to Lodha. Now, how will you value that? While Lodha, he built one of the most iconic towers of India on that premium piece of land, but the profits are very limited. So this land bank valuation, I know काफी बार when I meet stock investors, they tell me this land value इतना है, this and that, and मुझे वो land bank valuation में only I find quite a bit of discrepancy. कि measuring it is very difficult, and how many stakeholders and what arrangements and sub arrangements are there in it. Got it. Got it. So I think we have already. देखिए और एक चीज अंकित जी, I think which since you're from the stock market community, one thing which is even I find it even more entertaining than land bank valuation is actually pre-sales. ठीक है. Right. मुझे आज तक समझा नहीं कि what is a pre-sale. If I take 1% from a home buyer and I call it pre-sale, is it a pre-sale? I put 1% now, and after that I can cancel. Exactly. So इतने मैं तो अभी one recently I saw one episode where one listed developer announced in his on his announcements on the stock exchange a number based on EUIs. So I don't know what exactly. Sometimes when I read through these things, the model should always be that you should not be able to count pre-sales, in my view, until you don't have anything registered, and that registration should be at least 10%. Then it's almost a closed deal. Right. 1%, 2%, 5%, 9% doesn't make any sense. Right. Right. And then this is even more in cases of markets like NCR. क्योंकि NCR में तो the broker is not a broker, ना, he's a trader. So the builder has sold to the broker, okay, and said, house full, I have sold 2,000 crores worth of inventory. But that broker has to sell it to Ankit and Vishal after that. So between the time the same apartment is sold till the time it is delivered, it changes hands 3 times. And the builder is dependent on funds from all 3 at different stages. Right. So we have to be very careful in this. But between land bank valuation and pre-sales valuation, I will prefer land bank valuation, because pre-sales valuation does not have any logic in to my mind. So I know you're not a equity or stock market person, but if I have to ask you, what according to you, and somebody asked on the comment also, and since we are discussing on that topic, what according to you is the best metric to value a real estate business?
ठीक है, I think the same way as you value other business based on profits. Okay. ठीक है, based on profits, keeping cash flows in mind. ठीक है, the reason why I say profits is because real estate companies, they have a accounting procedure which is slightly different from other sectors. So you have to monitor cash flows as well. Uh, and I think that still remains the old-fashioned, simple way of judging a real estate business. क्योंकि देखिए, everything else ना can be fudged. Right. ठीक है, pre-sales I can fudge easily. ठीक है, my profits, क्योंकि इतने projects हो जाते हैं ना, with each one having a different year for OC, occupancy certificate, I will never know the reality of a project, how it is done. So I think eventually, I hope we move to a stage where we get project by project breakup of sales and profits to know how the business is doing. क्योंकि अभी it's a खिचड़ी. मुझे आज तक एक one listed company I remember in 2020 इतने fanfare के साथ उन्होंने launch किया, इतने fanfare के बाद, ठीक है. Then COVID came and उसके बाद एक stamp duty cut भी आया. उन्होंने बहुत बड़ा announcement किया in terms of sales. ठीक है. Now the rule in Mumbai is very clear, right? आपने 10% पैसा दिया, उसके बाद you have to register the apartment. मैं रुकते गया almost for a year, Ankit ji. If you have done the sale, you should show your registration. But registrations were not even half of what the sales were being claimed. ठीक है, तो I think eventually I hope we start getting to the stage of more transparency. And एक चीज, I think if they can just stop doing now the circuses of pre-sales. Right. So, Vishalji, since we are already past 1 hour, I have a few questions on the chat box. I'll bunch them together and I'll ask those questions. So, a couple of people have asked regarding the theme of retirement homes or senior living spaces. Do you have any view on that as to how do you see that trend going forward? And companies which are there in this space, do you think that will benefit out of it? I think senior living is a very good opportunity. Senior living is a space that I think can grow very fast. But positioning has to be not done as senior living. ठीक है, क्योंकि अभी भी in a geography like India, there is a cultural resistance to abandoning parents and leaving them at senior living. So it has to be positioned differently. Who I'm confident developers will manage effectively at the right locations. That will be, I think, a very good value proposition. Because that is a true service product. Because I'm not just selling you a unit. Right. I'm selling you a service. And real estate over a period of time, Ankit will become more a service-led business. Right. For many years, it has been this business कि मैंने अंकित और विशाल को घर बेचा, उसके बाद I vanished. Right. We will move to the stage where gradually product and service जो अभी ऐसे है, product का role here है, service का यहाँ पे है, it'll keep coming like this, and after occupancy, service का role will grow drastically. Everything will be bundled inside. Be it in terms of senior living, in terms of hostels, co-living, all these themes, I think there's a very, very good future. It's a very good opportunity. It just needs to be handled diligently. It needs to be treated like how, hotel companies think of their business. वो soft touch जो होता है ना, that needs to be there. Right. So, Vishalji, before we let you go, I think personal stories are more memorable and inspiring. Before you leave us, can you please share a personal story of yours in the industry or someone else's? Which is your favorite story from the real estate sector? I think that would be a very good way to end the session today. Okay, I think stories for real estate में actually बहुत है अंकित जी. In fact, I'll tell you a few things that. आप 2-3 स्टोरी भी सुना सकते हो. I'll tell you one very good episode I had when I was doing a show with Niranjan Hirandani. Okay. Where in Mumbai there's a location called as Powai. Okay. And
जब उन्होंने वो जमीन खरीदी थी इन द 1980s, he had to invite people to come and see that place, तो इतना दूर था, ठीक है। अभी भी हम लोग जब पवाई के बारे में सोचते हैं ना, people talk about leopards being there, इतना दूर था इन अवेलेबल, okay। And he in fact told me a very good story. He said कि I wanted to create a world which did not look like a typical Indian city, क्योंकि मेरा problem was I used to make a very good building, ठीक है, but the people staying in my building, they used to never like looking out of their window because it was so messy, chaotic, dirt, filth, sewage. So the only way to have control about your ecosystem is to develop your own ecosystem. And in the way Hiranani and DLF, okay, have created their own ecosystem, which is why they can charge the premium that they do. क्योंकि लोग को पता है ना कि when they get out of their building ना, I don't feel like I'm in a city that is managed by, जैसे आपका BBMP है, ठीक है। मैं आपके यहाँ पे जब आता हूँ बैंगलोर में, तो मुझे इतना इतना बुरा लगता है when I exit the tech park, हाँ, वेलांदूर में वो एम्बेसी का जो टेक विलेज है, it's so beautiful outside, and when I come there, it's so disgusting and pathetic, okay। So you control your ecosystem that way, and I think that has been a big learning for many players, because now everybody tries to control their ecosystem in different cities, ठीक है। पूना में there's a मगरपट्टा city, in Bangalore there's Prestige जो 100 एकड़ 200 एकड़ के ऊपर बनाता है। In terms of challenges now, I'll tell you, Ankit ji, that there is no building, no sector that is as challenging as construction. Okay? And because there are obstacles every day, क्योंकि आप you deal with 200-300 लोग ना, कि every day somebody will come and tell you कि ये नहीं हो सकता। I जब भी मैं builders को पूछता हूँ कि why do builders why do people hate builders so much, ठीक है। You know, they often tell me कि you may hate us, Vishal, but if I am not tough, houses will not get built, because everybody thinks एक builder इतना पैसा कमाता है ना, तो they try to extort from you. Now, I'm not defending a builder, and I think fortunately most people know me to know that I'm not the biggest fan of developers, but their struggles in managing an ecosystem and getting a project off ground, I think that deserves to be highlighted a lot more. Uh, Builders should market their projects lesser and market their ability to build new towns and cities better, क्योंकि वो उनका कंट्रीब्यूशन काफी जोरदार है। कल इनफैक्ट आई वाज एट पैनल डिस्कशन विद अभिषेक लोढ़ा एंड निरंजन हिरनदानी एंड शोभित फ्रॉम मैनरॉक, एंड जब हम लोग बात कर रहे थे, the gap I think is very clear in terms of supply demand, ki in population wise 6 lakh homes get sold in India in a good year, and 1 crore homes get sold in China in a bad year. So that's the runway in terms of growth. Obviously इतना simple नहीं है कि there's a reason why only 6 lakh homes get sold and 1 crore homes get sold in a different geography. But when somebody looks at the opportunity that is there and what it takes to get done, uh, I think at a structural level, जो आपका पहले सवाल था ना, कि the short term blips and then we'll be on a structural growth going forward. On that, I fully agree with you if we are able to manage the structure right, because the underlying fundamental is very strong. And uh, the most interesting stories in real estate are the ones that cannot be told. So अभी जब हम लोग बात कर रहे हैं, I'm thinking about some interesting story, but in the back of my mind it's also that ये बोलूंगा तो ये impact आ जाएगा उसके ऊपर, क्योंकि of the type of stakeholders that are to be involved. But maybe one of the days when the camera is off. But I am reminded of that one story you talked about. I think Tata's and Sarapunji's जी के सामने में कुछ आपका रियल एस्टेट रिलेटेड इन मुंबई कुछ हुआ था, आपने अपने पॉडकास्ट में भी शेयर किया था उसको। टाटास का
हाँ, टाटास का एंड आई थिंक शारापुंजीज का, कुछ तो रियल एस्टेट का था, इफ यू एक रिमेम्बर। एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि इन हाँ ओके। तो हु ऑल होल्ड द लैंड इन मुंबई अर्लियर, उसके ऊपर था आपका। हर्षल ने जस्ट रिमाइंड किया मुझे। यस। देखिए, द बिगेस्ट लैंड होल्डर्स इन मुंबई आर द ओरिजिनल wealthy of Bombay, Mumbai now, the guys who dominated cotton. So Godrej is the biggest landholder. ठीक है. There are other Parsis also who hold a lot of land. ठीक है. प्रॉब्लम क्या है कि Godrej is the only one जिन्होंने अपने लैंड को प्रोटेक्ट करके रखा है. बाकी सबका लैंड इंक्रोच हो गया है. ठीक है. एक एक लैंड होल्डर है, आई नॉट नेम हिम, बट ही होल्ड्स लैंड व्हिच इज वर्थ अबाउट टू माय रफ एस्टिमेट अबाउट 20,000 crores. ओके. तो मुझे वो बोल रहे थे कि विशाल मेरा जमीन यहाँ पे है, वहां पे है. तो मैंने उससे पूछा, बट हाउ मच इज नॉट एंक्रोच्ड. तो वो ऐसे जाते हैं, नॉट इवन 1 acre. तो हाँ, तो ये सब देखिए, लैंड इज वेरी टफ टू प्रोटेक्ट, नो. एंड द वेल्दीस्ट a person who could have been wealthier than Tata's, Ambani's, Adani's, was actually a lawyer, a person called Framji Dinshaw. ठीक है. uh, उनका contribution in terms of Mumbai today is unmatched because उन्होंने काफी sectors में dominate किया. कि एक तो they owned, he bought a 12.5% stake in Tata's in the 1920s, जब टाटास को पैसे की जरूरत थी. 12.5% स्टेक. हाँ, आज वो 12.5% का स्टेक विल बी वर्थ 1 लाख करोड़. ओके. उसका प्रॉब्लम ये था कि द मोमेंट ही डाइड ना, 1 year लेटर हिज किड्स सोल्ड द एंटायर स्टेक टू शापुरजी पालन जी. अगर हिज किड्स ने कुछ नहीं किया रहता ना, कुछ नहीं किया रहता, इट वुड हैव वर्कड आउट. Besides that, he is the one who created the merger of many cement companies that created ACC. Unka, he has a lot of land in Mumbai even today, which is worth I think some 50-60,000 crores, which is being held by managed by the Nusli Wadia Trust. देखिए, एक कंपनी जो आप काफी लोग मिस कर जाते हैं, doesn't come top of mind to me also, are actually players like Bombay Dyeing and Mahindra. ठीक है. In my view, the two players who should have been a lot bigger in real estate but are not now are Mahindra and Bombay Dyeing. Bombay Dyeing should have been as big as Godrej Properties. उनके लैंड बैंक की वजह से, उनके ब्रांड की वजह से, in terms of their operational organizational strength, same in Mahindra. उनका ब्रांड था, they could have gone very strong, acquired land, done more business development, but they did not do it. हाँ, तो I think in these stories, like I said, Ankit ji, many of the most fascinating stories are the ones that I can only tell you once the camera is off. Uh, but uh, but regarding this land itself is a very fascinating story. Zameen जो है, I think many people do not even today realize that the war between Britain and China in the early 1800s was because of opium. क्योंकि opium was going from Bombay to China. China ने वो confiscate कर दिया. British waged a war on China, and in return, after they won, Hong Kong was given to them. So Thank you so much, Vishalji. It was wonderful, and thank you so much for. I know you have been traveling a lot in the last 7 days, and still you agreed to do this. I think yesterday only you came back. So thank you so much, and I hope all the listeners who joined us live and people who will watch on our YouTube channel when we'll put it up will find a lot of value to it. So thank you so much once again, Vishalji, and thank you so much everyone who patiently heard us for the last 1 hour or so and asked some really good questions. Thank you, everyone.